Friends, we have two eminent personalities now on the dais to enlighten us on the latest trends in cinema. We have with us Sri Subash Ghai. He needs no introduction to the Indian film fraternity, but still, Sri Subash Ghai is an Indian film director, producer, and screenwriter known for his works predominantly in the Hindi cinema. His most notable films include Kalicharan, Curse, Hero, Meri Jung, Karma, Ram Lakhan, Saudagar, Khalnaik, Pardes, Tal, and Black and White. In 2006, he received the National Film Award for producing the social problem film Iqbal. Ghai is the founder and chairman of his Film and Media Arts Institute, Whistling Woods International, which has entered its 10th year now. The Whistling Woods International Institute was set up in the year 2006. Since then, the institute has diversified into animation, media and entertainment, communication, and to fashion. To date, more than 100 media and entertainment professionals have graduated from the school. Also present in this press conference with Subash Ghai is Mr. Soketu Parikh, noted filmmaker. Sir, I request you to make an opening statement and enlighten us more on the latest trends in cinema. Good evening, everyone here, and thank you for being with us to exchange our views. I think let us talk more and interact more with the interactive session. I would like that if you put questions and I answer, that would be much better. Because I must know what you know first. If I go on speaking what you already know, you will get bored. You will want a tea break. Right? So I think I should avoid a tea break in our conversation. So let's talk. When you are talking about a particular subject or you are talking about the general in cinema, if you are talking about the trend in cinema, trend is as good as a trend of centuries, trend of decades, trend of time, people, mankind, societies, values. So changing values, changing societies, create new trend. Exactly. After every decade, after every two decades, 3 decades. And I personally feel one generation means 25 years to 30 years. So after every 30 years, there is a different people. And new people are born who are grown up enough to think differently than the previous generation. So my generation was, if you think as far as cinema is what? Storytelling. Stories, all the time stories. But stories have been told in a different devices, medium, different technology. Our best of the stories, Indian stories were told 3,500 years back, Ramayana. So have we improved on that? Are we capable enough to write a better Ramayana or better Mahabharata? So what we are talking about? What kind of trend? Are we the better thinker than the 5,000 years back we were? Are we better in wisdom, spiritualism, or narrating a story? I think my Nani was the best storyteller when I was innocent and ignorant enough. Even she was telling me bullshit story, I would love it. So when you make a fictional or non-fictional stories, as far as you impress audience, the current audience, that's called a trend. So there is no fixed method or formula. The storytelling and story listener, the relationship between story listener, movie goer, or a storyteller, movie maker. There has to be an ideal relationship that both think alike. When audience feels, I think alike what the movie is a hit. When you say, I don't think alike. So the current movies which you are seeing for the last 4 or 5 years is a different one-line story. There was a one stories in 40s, if we go 40s, that sacrificing for your neighbor, giving your blood and teeth, tooth for the neighbor. And then there was a story of friendship in 50s, 60s, sacrificing their life for others, wife for the husband, father for the son, son for the mother, sacrificing nature. People were kind enough in 40s, 30s,
Kindness was their biggest virtue. Then came the sacrificing. Then 70s, 60s, having a patience, waiting and hoping for the better time, though all those stories were around that. Then came a violent stories in 70s, the violent cinema, when Amitabh Bachchan, a character, icon, became an anti-establishment character on the screen. When people want to revolt, that they are not getting what they should get. So the rich people were bad people in those stories. Though we always worship Ramayana and Rama and Krishna, who were kings, they were also rich. But in the 70s, 80s, we never liked kings. We said because all these rich people have become rich because of dishonesty, because of corruption. So the poor man felt the pain. So it was a war between poor man and rich man. Then came the 90s and 21, where the romantic cinema took over, when Mr. Shah Rukh Khan was born. And he was always interested in a girl who's getting married. He could never search a girl who was never married or who did not have any proposal. So उनका था कि क्या अपने अपनी ज़िंदगी की उसी के हवाले कर दी है जिसको जो लड़की चाहती है, जो उसके माँ बाप ने डिसाइड किया वही उसका पति होना चाहिए. जो आदमी आपसे प्यार करता है वो आपका पति नहीं होना चाहिए. टाम लड़की को अवेकनिंग हुआ. दिस इज रॉन्ग, माई पेरेंट्स आर डूइंग. सो एंटी पेरेंट्स वैल्यूज पिक्चरें शुरू हुई कि नहीं. सो फिर उसके बाद शुरू होते होते चलो जो लड़की चाहती है वो करनी चाहिए कि उसको चाहिए कि जो दूल्हा खड़ा है वो मुझे पसंद नहीं, जो लड़का बाहर खड़ा है वो मुझे पसंद है. और दूल्हे को माँ बाप को सारे खर्चा वर्चा उसका एक्सपेंडिचर छोड़ के भाग जाती है उस लड़के के साथ, और लोग तालियां मारते हैं, लिव बेबी लिव. तो ये वैल्यू शुरू हुई कि लड़कियों ने भी रिवोल्ट करना शुरू किया. उसने बोला कि मैन रिवोल्ट्स अगेंस्ट रिच मैन, व्हाट वाई वुमेन शुड नॉट रिवोल्ट. इफ आई डोंट लाइक ए मैन वाई शुड यू मैरी मी. उनका भी पॉइंट लोगों को पसंद आया बिकॉज वैल्यूज चेंज हो गई. फिर उसके बाद भी स्टोरीज का ट्रेंड शुरू हुआ कि नाउ दिस romance part is enough. Marriage, no marriage. Let's be good friends. What is the fun of marriage? So a friend can be a fiancé can have marriage can. But relationship का कोई definition. Let us have an undefined relationship of each other. Love has no name. We don't have any name. Up the relationship between the man and woman became with no name, no identification. As far as you are comfortable, I am comfortable. Both are with the open space. Both are comfortable with each other. It's fine with us. It's okay. It's okay. The girl says, fine. Let me choose you. Let me test you. Enough that you have tested me all these years. कि सितार आती है, खाना बजाना आता है, कि ये नहीं आता है, बहू बना सकता हूँ कि नहीं. अभी मैं तुमको चुनूंगी कि तुम उस काबिल हो या नहीं. So the girl's independence, woman independence again appeared. Now the latest trend what I watch is the one line, if you see there are 7, 8 films. The children, the youth, leave their house, rebuking their parents for a soul searching. So they go out of the house for the soul searching. Who am I? मैं इंडिविजुअल कौन हूँ? ये तो मेरे माँ बाप हैं, ये बेवकूफ़ से हैं. इन्होंने ज़िंदगी में किया क्या है, पाया क्या है, मुझे जन्म दे के उन्होंने क्या किया. बुद्धू थे लोग, कहाँ बढ़ गए लोग, मानिस बन गए, टाटा बन गए. मेरे पिताजी तो अभी तक बैंक में काम कर रहे हैं. आई हेट यू डैड, आई एम गोइंग आउट ऑफ द हाउस. बेटा ऐसा मत करो. लड़का सोल सर्चिंग के लिए निकलता है, पूरे देश विदेश घुमाता है और एंड में आके पिताजी के हाथों वहाँ हाथ लगा देता है. ही कम्स बैक टू द फैमिली. So every story on this line, you must have seen the 20 films now being made. The girl or the boy is confused whether home or no home, family or no family. So he or she travels now outside of the boundary of the house, a boundary of the values. So she can sleep with anybody, he can sleep with anybody, he can have a relationship with anybody. It's an open relationship they go through, but finally they realize, जिंदगी बहुत मुश्किल है. पिताजी ही ठीक है, माँ ही ठीक है, माँ के परोठे ही ठीक है, माँ के पिताजी का साथ ही ठीक है जो बाग में मुझको खिलाते थे. फिर उसको नाना की क्यारियाँ याद आ जाती हैं, नानी की कहानियाँ याद आ जाती हैं. And then boy and girls comes back. How many films have been made for the last 4 years? Lot of movies. Am I right? Go through these movies.
whether it's a Ranbir Kapoor movie or whether it is a Kangana movie or every movie. So the plot is same now. No, different versions of the same plot is coming. Now next क्या आने वाला है? Man can fall in love with man and woman can fall with a woman. So the time is coming very soon. What is wrong in it? So I'm not criticizing, I'm not judging about it. I'm saying how we have been changing. The trends have been changing according to the values of the society, the excitement of the society, exploring new things of the society, in the name of self-realization, in the name of self-independence, in the name of azadi. We are experimenting our own life. So the cinema is a reflection of the society, you know. जो society में होगा वो फिल्मों में भी होगा. So किस trend की बात कर रहे हैं? Trend तो आप देख रहे हैं. So as intelligentsia, you people are journalists, you are from the intelligentsia class, you understand more than me. That how the society is changing, how the politics is changing, how the people are changing, how the parliament is changing, how the journalism is changing, how the social media is bringing. What is happening to the youth? You all know. So the days are very soon, very, आप देखिए बहुत जल्दी टाइम आने वाला है जब आपको उस अधिकार के लिए भी फिल्में बननी शुरू होंगी. तो ये ट्रेंड जो है वो महाभारत से शुरू हुआ, जो राम था, जो कि सारी जिंदगी फेल रहा. He was a failure in all his life. He was a king, son of a king. He had to leave the kingdom. He had to go to the jungle. He lost his wife. He had to war against the big Ravana. Come back. He has to leave his wife again. He has to fight with his children. And then there was a story of a Krishna who says the change is the name of game. जीवन परिवर्तन जीवन का नियम है. He was opportunist. He changed his own ideas according to the situation. He was a musician, he was a philosopher, he was a warrior. So there was other ideal character. So there is nothing wrong in it. We keep changing. So the cinema. So as a filmmaker, what should I tell you? It's all about our mankind. It's all about our own society. And society is projected on the screen. That's what I can say. Now we can have a question answer. I've given you the lead. Thank you. Yes. Today we see a lot of biopics being made. I'm that from the Navan Times. Today we see a lot of biopics being made. So is that the new formula to success for film directors? Because people generally like these rag-to-riches story or sportsman stories or whatever. So what is the trend in terms of biopics, and what do you make of it? Simple question. Why do we have started liking biopic? Imagine. Because the current people don't inspire us. So we are trying to search all those people who really did a good job in their life. We are frustrated. We are restless. We do not have any light to see further. So we started liking, हमारे जैसे फेलियर थे वो इतने बड़े आदमी बन गए. मिल्खा सिंह आ गए, मैरी कॉम आ गई. ये लोग हमको इंस्पायर करते हैं. अभी हिस्ट्री वापस आने वाली है. अभी तो कुछ नहीं, अभी मेरी बायो कॉम क्या, अभी आप देखिए क्या होने वाला है. अभी हिस्टोरिकल फिल्म्स बनेंगी. अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो कॉस्ट्यूम ड्रामा बनेगा. फिर आस्ता आस्ता रामायण महाभारत कृष्णा बनेगी. Biopic it means now people are fed up with the current people because the current heroes do not know, they are confused. कौन सी वैल्यू बताना चाहते हैं हमको यार? इसकी लड़की, उसकी लड़की, उसकी लड़की, तुम्हारी लड़की, तुम्हारी लड़की, उसकी लड़की, पिताजी से एग्रीमेंट, इससे डिसएग्रीमेंट. ये क्या हो रहा है? बोले यार कुछ एक काम करते हैं, अच्छे लोगों के बारे में पढ़ते हैं, चलो बायोपिक देखते हैं. So the biopic stories are more meaningful today, which is a good sign. Because children want to be inspired, audience wants to be inspired. Right, sir? So that is why the biopics are getting popular. But once the biopic is over, because कितने biopics हैं? ज़्यादा तो नहीं. 30-40 के बाद biopics भी थक जाएंगे क्योंकि उनकी भी कहानियाँ सेम हैं कि बचपन का दुख, जवानी की संघर्ष और मिडिल एज में सक्सेस और बुढ़ापे में किताब लिख रहे हैं. एक ही जैसी कहानी सबकी.
है ना? सबके बायोपिक भी ऐसी हैं, तो कोई स्पोर्ट्स में है, कोई लिटरेचर में है, कोई सिनेमा में है, कोई कहीं है। सो वो कहानियों से बोर होकर वो राजा महाराजों की तरफ जाएंगे हम लोग, हम अपनी भाषा की तरफ जाएंगे। आई एम ए वेरी ऑप्टिमिस्ट मैन, अंडरस्टैंड, आई मे क्रिटिसाइज मैनी थिंग्स, आई एम एनालाइजिंग नथिंग, बट आई एम वेरी होपफुल that by 2035 and 40, you will see the quality cinema goer. You will quality people. People will be qualitative. In general, आपको किसी को बात करते हुए डर नहीं लगेगा कि यार कहीं मुझे उल्लू तो नहीं बना रहा। Today we are afraid of each other. We think कि इसमें सच कितना है, झूठ कितना है। चाहे वो हमारा नेता बात कर रहा हो या हमारा कोई धर्मगुरु बात कर रहा हो या कोई भी बात कर रहा है, तो हम उस पर शक से उसको सुनते हैं। हमारी पर्सनल डिसलाइक्स एंड लाइक्स जो हैं ब्लॉक करती हैं उस चीज़ को। सो मेनी फियर, सो मेनी डाउट्स इन अवर माइंड विद अवर ऑन सोसाइटी, ऑन रिलीजन, ऑन पॉलिटिक्स, ऑन कम्युनिटी, ऑन कास्ट एंड क्रीड, ऑल दैट इज व्हाई इट इज हैपनिंग, बिकॉज फियर एंड suspicion, they are dominating us. But with more education is the key word. When the next generation will come, when your children and your grandchildren, I can tell you one thing, your grandchildren in 2055, there will be fashion to speak Sanskrit. They will be speaking Sanskrit. The reason? Because it's a DNA of Indian to get married in Sanskrit, to do all havans in Sanskrit, and Sanskrit is the richest language. Finally, you will find there will be one language of the world, sign language. You will find the world will become one village, one city, one rule, one law. Almost very close to each other they will be. There will not be too many different contrast laws of society or the government. They will come closer. And because of the social net, children are confused, but it is very beautiful thing. Finally, the water will find its own level. Finally, you will see people will understand each other much better than today we are understanding. So the cinema, so the plays, so the story, so the literature. It will happen. Don't worry. India is coming back to be known as a Vidwan India, Vidwan Bharat. Thank you. There is definitely dearth of good stories because we don't have stories. Stories means inspirational story. Story means whether it's a Mickey Mouse story or it's a Chitralekha or a cartoon story. It is a story about the have-nots to have it. A good over, the triumph of a good over evil. Basic theme of every story has to be inspirational. So how many people are inspiring us today? And two things. One is the storyteller is making round and round, and the story listener does not have as standard as to understand the story, the depth of the story. He wants also the style in the story. फिल्मों में स्टाइल चाहिए, एक कैबरे भी होना चाहिए, एक आइटम सॉन्ग होना चाहिए, एक मौला का सॉन्ग होना चाहिए, एक बुल्ले शाह का गाना होना चाहिए। 3-4 गाने तो आज होने चाहिए, स्टाइल भी होना चाहिए, फोटोग्राफी अच्छी होनी चाहिए, कॉस्ट्यूम अच्छे होने चाहिए, ब्रांड्स नजर आने चाहिए। तो स्टोरी कहाँ गई? So the awakening part has to be better through education. Sorry. You were speaking about the trends about the story trends, but there are certain films which doesn't have any fall any trend. Take for example, Munna Bhai MBBS, Lage Raho Munna Bhai, 3 Idiots. These stories doesn't fit in any trend. Quite different. So what is your take on this? You see, storytelling is a democratic art, like cinema. आपको पता है जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं वो कभी भी कहानी नहीं सुनाते हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि कहानी सुना रहे हैं. They grip you for 2 hours. I was listening to Sadhguru on that time for 3 hours. We were listening together, and he was talking so gripping about the life and the philosophy of life. He was telling a story of life to us. Story does not mean the conflict only.
Story means a various kind of things. It's a humor, it's emotional, it's spiritual. There are different genre of the story, and there are different genre of the storytelling. You have a question? Okay. We see that technology is helping film, more and more technology. But do you think a time will come when technology will become heavy on the human element in the film? It will never happen. But there is always a fear. See, जिस वक्त 1940s 32 में जब पिक्चरें बनती थी तो टेक्नोलॉजी जब आई तो लोग बोलते थे ये एडिटिंग ऐसे होती नहीं, दिस एडिटिंग रूम क्या है, ये मूवी वाला क्या है, ये दिस काइंड ऑफ एडिटिंग इट कैनॉट हैपन. मैनी एडिटर्स लेफ्ट एडिटिंग बिकॉज द न्यू टेक्नोलॉजी अपीयर. टेक्नोलॉजी इज अ सपोर्ट टू यू. Whatever you want to show, it's a technology. मैं अभी टेक्नोलॉजी मेरे पास आईफोन है, करेंसी नहीं है. हाँ तो पेटीएम से मैं फ़ोन दे रहा हूँ तो क्या हुआ, पैसे तो मुझे उतने ही देने, 450 रुपये, 450 rupees, whether I pay from purse or from Paytm. So what technology has not increased my income and not expenditure. So technology is always a support. Finally, what matters is the human emotions, human give and take. उसका give and take क्या है? Thoughts का, material का. वो जो उसका characters है between two characters, that will remain intact always. No technology can remain dominant. So you mentioned about values and importance of education. Do you think this is a factor, the storyteller as well as the audience, it is getting more liberal and they're complementing each other in that sense, in filmmaking? There are two paths to it. One is that you explore. One is that you believe. Belief is what you know. And seeking is what you want to know. So what the stories you believe in Ramayana and epical stories and all those tested and tried films or classic films that you know, and you ape them, you remake them, you represent them, you adopt them, and you express them. This is called believing. Exploring is that you explore a new dimension of the human life. कि ओके ये भी एक रिलेशनशिप होता है, ओके ऐसा भी इंसान के साथ होता है, ओके ओके ओ ऐसा भी एक इंसान है. So the insan, mankind has got a billions of dimensions to explore. So the more you explore, more you have good stories. The more you good stories are stories with the curiosity, story with the exploration, to know more about it. That is why I told you the trend was because they kept following all those. जो मैं आपको बता रहा था कि 40 में होता, 50 में ऐसा था, वो because we went on exploring. अच्छा ऐसा हो तो कैसे हो, कुछ शादी कंपल्सन थोड़ी है, पति को परमेश्वर थोड़ी है. Let's talk to each other. Let parents be friend to teach children. I made a film called यादें कि let parents should behave like a friend to children, right? I made Pardesh कि let us not get the glamorous part of the America that everything in Western is great, not India. So we do explore this kind of thing, which are the hidden desire of our younger generation. He even wants to ask another question. Yes. I'm Prakash Kamal from the Hindu. Sir, at present the situation is that the film is one of the expressions of freedom of expression is the hallmark of this medium. Now what we find in recent times is suddenly again this issue of censorship, when there is certification, censorship and stifling of the freedom of expression, they are coming even for writers, even for media, even for filmmakers, they are struggling. Where are we going? That is not your concern, don't you feel? We are going very smoothly, sir. We get the things the way we want. It happens. एक इंसान दूसरे इंसान को कन्विंस कर ही लेता है, लेकिन उसके पीछे लॉजिक होना बहुत ज़रूरी होता है. कोई भी चीज़ जो आप सेंसर की प्रॉब्लम कह रहे हैं, मैं जब इंडस्ट्री में आया था 1970s, 68 I came. The first thing I heard in the film industry, censor is going to be very strict this time. Till that, for the last 45 years, I have been hearing every year, there is a censor problem.
फिल्म्स आर बीइंग मेड, चलती हैं फिल्में, फ्लॉप होती हैं, नई नई फिल्में भी आती हैं, ट्रेंड से भी होती हैं, फिर और लूज़ करते हैं, फिर और ओपन हो जाते हैं। अभी क्या क्या नहीं हो रहा है सब सिनेमा में। 60s में तो किस भी अलाउड नहीं थी, अभी तो सेंसर वाले पूछते हैं कि किस क्यों नहीं है इस पिक्चर में, है? बिकॉज जो देखने वाले सेंसर वाले हैं वो भी तो बदल गए हैं, वो भी तो आज 2015 के लोग हैं। आप ये क्यों समझते हैं कि सेंसर के अंदर एक बुढ़ा बैठा है 1940 का, वो भी तो यंग वंस ही हैं। लेकिन ओनली थिंग दैट कॉन्फ्लिक्ट इज ऑलवेज देयर, सेंसर वालों का कहना होता है कि ये आप पब्लिक प्लेस में चीज लेके जा रहे हैं। मॉरल, देखो एक बात सुनिए, नो नो नो, इट्स अ वेरी डिबेटेबल एंड आई एम नॉट जजमेंटल अबाउट इट। दे आर ऑल्सो राइट कि देयर शुड नॉट बी एनी मॉरल पॉलिसी। लाइक एक घर है, आप अपने देश को एक घर की तरह लीजिए। सपोज आपका पूरा देश एक घर है, उस हमारे घर में क्या होता है, दादाजी हमारे हेड होते हैं, एम आई राइट? और दादाजी हमारे हेड होते हैं, वो हमारे दोनों चाचा भी, फादर भी, मैं भी, बच्चे भी, सब लोग होते हैं। उस घर का रूल जो है एक दादाजी बनाते हैं, बिकॉज बंगला भी उन्होंने बनाया है, खाना भी हम उनका खा रहे हैं, और पूरी फैमिली जो 25 की है वो चलती है। उन्होंने जो कहा कि ये होना चाहिए, दादाजी जब मर जाते हैं तो ये बट जाते हैं, फिर सबके इंडिपेंडेंट थॉट आने शुरू हो जाते हैं, फिर एक नए दादाजी बड़े ताऊजी शुरू होते हैं, फिर उनके रूल चलते हैं। और फैमिली यूनाइटेड तभी रहती है कि जब आपको बड़े बड़े लोगों की बात इसलिए मानते हैं क्योंकि उन बुजुर्ग लोग टेस्टेड एंड ट्राइड विजडम के ऊपर आदमी खुश कैसे रहेगा, उसकी हेल्थ और विजडम और इंडिपेंडेंस कैसे खुश रहेगी, ये रूल होना चाहिए। रूल बदलते जाते हैं। पहले ज़माने में जो देवदास फिल्म बनी थी, शरद चंद्र जी ने लिखी थी, कि एक लड़का अपने बाप को ये भी नहीं बता सकता कि मैं उस लड़की से प्यार करता हूँ, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, और वो खुद घुल घुल करके मर जाता है, सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेता है। तो शरद चंद्र जी ने कहा कि अब हर फादर को अपने बेटे से बात तो करो, वो मर गया, तुम्हारा एक ही बेटा था। So the social problems will always remain and man will always revolt कि let me express my desire, क्योंकि डिज़ायर भी बढ़ती चली जाती है। और कुछ लोग हैं उनको रोकते थे, बेटा बताओ आहिस्ता आहिस्ता चलना, स्लोली स्लोली। बट कुछ यंग होते कि नहीं स्लोली क्यों, आज क्यों नहीं, बस स्पीड और टाइम का फर्क है। आप देखेंगे कि 10 साल के बाद सेंसर होगा। सेंसर का क्या मतलब, आज भी सेंसर नहीं है, आज सर्टिफिकेशन है। कहाँ है सेंसर भाई? आपको एक ए सर्टिफिकेट लेना है, AU लेना है, यू लेना है, ये 5 कैटेगरी हैं, कौन सी कैटेगरी में आपको रख देते हैं? आप पूरी पिक्चर, आज सेंसर वाले बोलते हैं आप जैसी बनाइए आप रिलीज कीजिए, लेकिन आप ए ले लीजिए, नहीं वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। तो कुछ नियम आपको अपने देश के, अपने कानून के, अपनी संस्थाओं के मानने ही पड़ेंगे, और मानने भी चाहिए अगर देश को हमने एकत्रित रखना है और प्रसन्न रखना है। Thank you very much. Now let him ask. You want to ask something? Yes, sir. Sir, I have a widely discussed, well-debated question. I just want to know your thoughts about it. Can good cinema re-engineer the society and get rid of the vices? Is cinema capable of doing that? Please repeat your question. Films, do films, apart from being just a mere reflection of the society, is films capable of getting rid of the vices of the society? Yes, yes, of course. Film leads you. Film can lead you. Like he talked about the 3 Idiots, we talk about the Tare Zameen Ke. They gave a lot of sense to the people, to the parents, कि we should allow our children what they want to become. अगर स्पोर्ट्समैन बनते हैं या वो see, the cinema has contributed a lot. सिनेमा ने यूनाइट किया है इस कंट्री को। सिनेमा ने एक दूसरे के कल्चर के बारे में एक्सप्रेशन दिए हैं कि हम लोग ऐसे हैं, बंगाली के लोग ऐसे हैं, गोवा के लोग ऐसे हैं, वो लोग ऐसे हैं। हम एक्सेप्ट करते हैं उन कैरेक्टर्स को। और टुडे इन पंजाब पीपल स्पीक मराठी, वाट लग गई, ऐसा सब इस तरह के वर्ड बोलते हैं। सो व्हेन आई गो देयर आई फाइंड कि दे नेवर हर्ड दिस वर्ड, बट दे आर स्पीकिंग हाफ मराठी ऑल्सो, एंड मराठी पीपल एंड गोवन पीपल एक्सेप्टिंग पंजाबी ऑल्सो। ओ कुड़िए कुड़िए कुड़िए, नशे दी चढ़ गई ओ कुड़िए, है ना। सो द मल्टी लैंग्वेज, द मल्टी स्टेट्स, cinema has united them, brought them closer. It's a very happy news, I would say. Cinema leads also. Cinema analyze issues. Cinema
influences people, society. Cinema creates India as one. I'm proud of it. I would like Parikh sir to give your thoughts on the changing trends of cinema. Well, I was wondering when he asked me about the moral policing. When we say the certification is binding us, it's chaining us, what are we looking for? Freedom, right? So we are chained to freedom then. We are always slaves. We think like slaves because then we are chained to freedom. So why? Why should you be chained to freedom? When you don't want to be chained to certification. Having said that, as he was explaining कि घर में एक ताऊजी होते हैं तो हमको एक आँख की शर्म होती है, दो भाई की दो बीवियाँ होती हैं, तो you don't look at your brother's wife as a woman. Only because it is a morally you have been explained from your childhood that that lady is your भाभी, उसको आप औरत की नज़र से मत देखो. वो ताऊजी नहीं होता, आँख की शर्म नहीं होती, तो you can play havoc, which happens when you are drunk, and we have seen that in the films, which is the reality of life. So moral of India as a nation, we have certain moral values. Whether we want to stay within them or not is a matter of debate, but there is something that we have been taught which may not be the Western culture. So let's look at India as our country, our first as India as our family. We are yet far away from globalization and adopting the entire world. Maybe the entire world will adopt what we are talking. You see, very conveniently we compare ourselves with the Western Let them compare us. Very conveniently we convince ourselves with the Western civilizations. वहाँ है ऐसा तो यहाँ क्यों नहीं है? वहाँ तो बहुत सी चीज़ें हैं. वहाँ पर तो 5 साल का बच्चा जो है वो इतना इंटेलिजेंट है, इतना क्रिएटिव है. These people have created iPhone. They have designed the science. आपने तो सिर्फ आईफोन मैन्युफैक्चर भी नहीं किया है, सिर्फ बेचा है आपने. उन्होंने डिज़ाइन किया है. उनकी एजुकेशन लेवल्स बचपन से ही एक स्किल्ड एजुकेशन है. हमारी मेमोरी बेस्ड एजुकेशन है. आप इसके ऊपर क्यों नहीं बताते? अब जो मेमोरी बेस्ड एजुकेशन के ऊपर हाफ नॉलेज आदमी है और हाफ एजुकेटेड आदमी, ही कैन बी वेरी डेंजरस. एंड ही सेज नो आई वांट आज़ादी, मैं तो ऐसी बात करूँगा, मुझे करने दीजिए. तो आप बोलेंगे आप स्ट्रीट पे कैसे कर सकते हैं? तो आपको ये समझना चाहिए कि फर्स्ट वी शुड एजुकेट अवर चिल्ड्रन. दे हैव सी आज़ादी मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. इट शुड कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी. एबिलिटी टू रिस्पॉन्स इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी. व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी? एबिलिटी टू रिस्पॉन्स टू द हार्मनी ऑफ सोसाइटी, टुवर्ड्स द पीपल अराउंड यू. Then you have azadi. Who stops you? You cannot abuse the word azadi. That let me do the way I think. Okay, but you have devices. You write books. You write many other devices through your blogs, through your own things, through your features. So there is a code of conduct in life. We must follow. Next question. Freedom, right? I think that is a very demeaning your statement is. Our society is not, I would put it this way, I will put this way, that we must educate our children to enlighten enough to understand the meaning of Azadi and meaning of creating and exploring a new dimension for the harmony of the human civilization. We must enlighten our children first and then see what they do, which I told you, na? Our people will be with one people and it will happen. I will add to this. We've read in the books about Buddha, that Buddha got enlightened. Buddha had the ultimate freedom of his mind. Right? What did he preach? After understanding the ultimate, he preached that Buddhism, his fun liner is, Buddhism is not a religion, it's a way of life. Yes. Because he understood that religion was a taboo. It's better that you understand the way of life. So even an enlightened soul like Buddha, he is trying to preach something which is to bind you into living a better life. See, end of the day, what you want? You want freedom for what? For better life? Better life. Absolutely. Who makes trend in the films? Society creates a trend. एक पिक्चर बनी दीवार, उसके पहले बनी थी नमक हराम.
तो पिक्चर और नमक राम की स्टोरी बड़ी डिफरेंट थी. एक आदमी ने एक्सपेरिमेंट किया और नई पिक्चर बना दी अलग टाइप की. सोसाइटी ने उसको हिट कर दी, ऑडियंस ने, वो ट्रेंड बन गया क्योंकि लोगों को यहाँ पैसा बनेगा. तो ट्रेंड इज नॉट क्रिएटेड बाय अ फिल्म मेकर, इट्स द ऑडियंस दैट मेक्स द ट्रेंड. That this movie is good, we want to watch this kind of film. So 20 more filmmakers go and make that kind of a film. They follow the trend. The trend is created. Now, within that trend, एक और बंदा आता है, एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म बनाता है, that goes hit. 5 और बनाते वो नहीं चलती है, because they don't understand how to address it to the audience. The filmmakers are trying to copy, imitate, but they have not understood the crux, the audience pulse. So trends are created by us, the audience, not by... So any question regarding movies, cinema? The last question, please. Okay. कहिए, हाथ उठाया तो कह दीजिए. While deciding when selecting a story, what you keep in mind? First, when I think of a story, the interesting character and the plot with a theme. Theme is very important for me. What do I want to say in the film? I want to say in a commercial way, fine. I want to say in a funny way. I want to say in a basic animated way. It's okay. But what do I want to say? Because I feel the animated films also say something. The theme is very important for me. And then the interesting character and the situation he goes through. That's how I decide my character. And the sources are different, sometimes from news, sometimes from people you meet, sometimes from life. It happens. कितनी खूबसूरत बात है. आप कितनी खूबसूरत बात करें. अच्छी बात है ना कि कमर्शियल सिनेमा में और आर्ट सिनेमा का जो डिफरेंस है वो कम हो रहा है. बिल्कुल आपको लगता है क्यों नहीं? क्योंकि हम ज़रा सीनियर हैं तो हम बोलेंगे ए, क्या बना रहे हैं. ऐसा थोड़ी होता है. दे आर मेकिंग वंडरफुल फिल्म्स बिकॉज दे बिलोंग टू दिस एज. दे आर ब्रिलियंट. आई एम प्राउड ऑफ देम. जैसे हम अपने यंग एज में थे वो आज अपनी यंग एज में है. So they are doing a fantastic job, the children, and a lot of children have great philosophical thinking behind their stories. Look at the films they are making. I'm amazed. I'm very happy. That is why it brings a hope in me that Indian cinema will be recognized as one of the best cinema in the world, which conveys great stories. Which analyze issues of mankind, and it brings people together. Thank you. Sir, there is an issue of cinematic liberty. आज ऐसे क्रिटिसिज्म हो रहा है कि चंद्रगुप्ता मौर्य और सम्राट अशोक के जीवन को तोड़ मरोड़ के सीरियल के एपिसोड्स बनते हैं. बाजीराव कभी जो अपने असल रियल लाइफ में कभी नाचे नहीं, गाना भी नहीं गाते थे, उनको नचाया जाता है. So what is your take on this, taking the cinematic liberty and molding the historical facts and figures which were actually not there? Or you see, yes. What I want to say here, it is not a cinematic liberty, it is an artistic liberty. You see, जो भी कहानियाँ 3000 साल पहले लिखी या 1500 साल या 600 साल या 200 साल पहले लिखी, क्या ऑथेंटिसिटी है कि वो कहानियाँ सही थी? आर यू श्योर कि वो कहानी जिसने लिखी वो सही थी? कि उसका पॉइंट ऑफ व्यू अगर उसके दुश्मन से पूछो तो बोलिए कहानी गलत है, कहानी ऐसी थी. अगर आप कंस को पूछो कि कृष्णा क्या था या रावण को पूछो कि राम क्या था, स्टोरी अलग बदल जाएगी. वो तो राइटर्स की इमेजिनेशन थी, जो कहानियाँ लिखी वो इतिहास बना, इतिहास हमने पढ़ा, वो हमारे गुरु में आ गया. सो आर्टिस्टिक लिबर्टी मीन्स, इसमें टेक्निकल सिर्फ एक मिस्टेक हम करते हैं कि हम क्या करते हैं कि वो बना रहे हैं. हमें हमेशा ये कहना चाहिए इसे बेस्ड ऑन रोमाना, बेस्ड ऑन दैट पर्सन, बेस्ड इज बीन इंस्पायर्ड. अमेरिका में बिल्कुल वेरी क्लियर फंड है उनका. इट इज इंस्पायर्ड बाय महाराणा सिंह प्रताप, इंस्पायर्ड ऑन दिस स्टोरी ऑफ सो एंड सो. इट इज एडॉप्टेड फ्रॉम द स्टोरी. इट इज माई एडॉप्टेशन, इट इज माई टेक ऑन दिस स्टोरी. अब आप देवदास देखिए फिल्म,
3 फिल्में देवदास बनी, एम आई राइट? पहली देवदास बनी दिलीप कुमार साहब के साथ, जिसमें कि एक बहुत पेंसिव, जो शरद की असली कहानी थी उसमें बताया गया कि बाप को बेटे से बात करनी चाहिए, नहीं तो बेटा खो देंगे आप, ये कहानी थी। लेकिन जिस वक्त संजय लीला बंसाली ने कहा देवदास बनाई, सेम फिल्म बना स्टोरी थी, लेकिन वो कहानी 2 औरतों की ईगो की बन गई कि मैं तेरा घर बात कर दूंगी, मैं तेरा बेटा एक दिन जल जाएगा, तूने मेरी बेटी के साथ ऐसा किया है। वो एक औरत की बद्दुआ की कहानी लग गई। सेम देवदास, उसको उसने हाईलाइट किया। इट वॉज हिज टेक, हिज इंटरप्रिटेशन ऑफ देवदास स्टोरी। देन एक आदमी ने और बनाई, देव डी बनाई, उसने अपनी इंटरप्रिटेशन बनाई देवदास की। तो इंटरप्रिटेशन and you have full liberty to interpret the way you want to. People like it or not, that is a different thing. But you should be given liberty to express yourself. Only thing that you should claim, and you should not claim किसी original story. Say it is based on, or not कि मैं वही बना रहा हूँ। वहाँ एक technical mistake हम करते हैं। Otherwise, children should be given full liberty to express and to adopt, re-adopt, remake any kind of story which they feel like is inspiring for them. आप जिस समय इस इंडस्ट्री में आए थे उस समय बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस वगैरह नहीं होते थे। अभी आप भी एक इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और भी दूसरे इंस्टीट्यूशंस हैं, और इस तरह के जो फेस्टिवल्स होते हैं, क्या आपको लगता है पब्लिक को अवेयर करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा योगदान कर रहे हैं और पब्लिक में कुछ अवेयरनेस बढ़ रही है इस तरह से? I belong to FTI. I was the first student of FTI Pune. Said most of you know or not. The first batch of actors. Then my next year junior was Nasuddin Shah, Shatrughan Sinha, Jai Bahaduri, Shabana Azmi. And then, but I became an actor, then a writer, then director, then producer, then corporate, then educationist. So my journey is huge long. But having said that, we need to understand that we have a responsibility to create the awareness of good cinema. Whatever we make a commercial film. I made many commercial films only throughout mainstream cinema. But I always tried as a student of cinema that my film must give some kind of a positive energy to the people. मैं फिक्शन बनाता हूँ, लेकिन एक पॉजिटिव एनर्जी में छोड़ के जाता हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फेस्टिवल्स की भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, टू यूनाइट द होल वर्ल्ड, टू let Indian know how Korean thinks, how French policeman thinks, how American judge says, how a husband treats a wife, how a son treats a father. ये उस कल्चर के बारे में, so we go to their bedroom and drawing room to know them, which is not possible through our other media. But film stories tell you, because it's their stories. So it brings the world to the one uniformity. Festivals are very, very important for the people. Even I have learned so much from the festivals. Being a सब तो स्टूडेंट ऑफ FTI के नहीं हो सकते ना, तो आम पब्लिक तो यही वर्कशॉप है उनके लिए 10 दिन की, and they must attend. Public in general, all you media people must attend this, see best of the films. You will also grow as a critic. आप खाली इसको फेस्टिवल को ये मत देखिए कि इसमें त्रुटियाँ क्या हैं, इसमें गलतियाँ क्या हैं, ये नहीं ठीक हुआ, वो नहीं ठीक हुआ, उसने ये बोल दिया. Don't try to search the negativity. Try to make people aware how beautiful films are here. And people must come and see the drawing rooms of the other people around the world. Thank you. Thank you very much. Thank you. That were real values of wisdom. Just like the water find its own level, like the son returning to his dad. Just values let prevail over trends. And meanwhile, technology shall be only be a powerful disruptor on the hands of a bold filmmaker. Thank you so much, sir. Pleasure.